गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुँची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आम आज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन गोटे नुआ चैप्टर से स्टार्ट करवा तार आम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन विषय देखा। तो देख मु एटा जोटा पढ़ाऊँ मु जहाँ भी पढ़ाऊँ प्लस टू सेकेंड ईयर हो कि फर्स्ट ईयर हो सबू तक देख तुम क्लास रे जहाँ चैप्टर अच्छी सेटा पढ़ाऊँ प्लस एटा तुम जो मेडिकल एंट्रांस हो कि ओयूटी एंट्रांस हो यार आंसर यही प्रकार ही प्रायतः तुम क्वेश्चन आसे मु तुमको ऑब्जेक्टिव यार ऊपर डिस्कशन भी करी किंतु ऑब्जेक्टिव डिस्कशन पूर्व सब मन रखी सब्जेक्टिव को सब प्रथम बेसी प्रायोरिटी दि जाए सब्जेक्टिव पर ही ऑब्जेक्टिव करा जाए। तेणु मुझे तुमको सब्जेक्टिव सब पढ़ाऊँ एगुड़ा जो मैंने जब तुम फ्यूचर मेडिकल प्रिपरेशन भी चाहूँ तुम निश्चय भाव में मो क्लास गुड़ाक देख मु जहाँ सब्जेक्टिव पढ़ाऊँ पूरा मेडिकल प्रिपरेशन को आखि आगे रखिकी तुमको पढ़ाऊँ। तेणु यहाँ पढ़ाई सारापर मुझे तुमको ऑब्जेक्टिव भी यार करेबी क्लास करेबी। तो आज आम देखा तो क्लास स्टार्ट करवा पूर्व समस्त को अनुरोध अच्छी मो चैनल को सब्सक्राइब कर एवं वीडियो पसंद थिले निश्चय लाइक करिवो। तो सब प्रथम देखा डाइजेशन कौन डाइजेशन जहाँ को आम कहू हजम होगा हजम क्रिया ठीक अच्छे। तो डाइजेशन कौन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। मन रख डाइजेशन माने कौन होची जहाँ आम खाद्य खाऊ कह जटिल खाद्य अर्थात कॉम्प्लेक्स फूड एवं से ही जटिल खाद्य को जिते आम खाऊ ता कौन हुए आम शरीर भीतर जाइकिना सिंपल फूड रे तैयारी हुए अर्थात सरलीकृत होता है। सरलीकृत है एब्जॉर्बेबल माने कौन से सरलीकृत खाद्य कौन हुए एब्जॉर्ब हो जाए अर्थात शोषण करी आम रक्त रे मिसे एवं आमको शक्ति जगाए। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस अच्छी जहाँ जटिल खाद्य को खाद्य ग्रहण कर सारा सरलीकृत होना जो खाद्यटी आम शरीर रे रक्त रे मिसी जाए ये संपूर्ण प्रोसेस को कहा डाइजेशन बा हजम। तो कहे ए प्रोसेस of conversion of complex food substances to simple absorbable form is called digestion. When the process of digestion occurs within the cell in the food vacuoles it is called intracellular digestion। मन रखिता आम डाइजेशन बा हजम क्रिया दीटा प्रकार अच्छी गोटे हूँ इंट्रासेलुलर डाइजेशन गोटे हूँ एक्सट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन माने कौन जोटा कि सेल भितर जो डाइजेशन होता है जोटा सेल बाहर जो डाइजेशन हुए कहे एक्सट्रा सेलुलर। तो आम मान प्रोसेस रे इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। एमती आउ कौ मान हुए एग्जांपल देख प्रोटोजोआ परिफेरा सिलेंटेरेटा एंड फ्री लिविंग प्लाटीहेल्मिन्थेस। When the process of digestion occurs outside cell it is called extracellular digestion अर्थात आउटसाइड सेल होता है जमती कि देख जोटा अच्छी सिलेंटेरेट फाइलम जमती अच्छी प्लाटीहेल्मिन्थेस हो कि कोडेड पर्यंत नियो तुम जहाँ जहाँ अच्छी आम सब एक्सट्रा सेलुलर डाइजेशन दी प्रकार होता है गोटे अच्छे इंट्रासेलुलर गोटे अच्छे एक्सट्रा सेलुलर। तब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स अकर इन द digestive tract or alimentary canal. The various parts involved in digestion can be broadly divided into two groups। देखो गोटे अच्छे digestive tract और गोटे अच्छे और alimentary tract ठीक अच्छे। तो देख तुम डायग्राम रे प्रथम आम देखला ही आम बुझीपर जे देख देख सब बड़े डाइजेशन बा हजम क्रिया आरंभ होता है कौटी पार्टी रू आरंभ है। तो पार्टी आम कौन अच्छी देख जोटा अच्छी देख बुकाल कैविटी जो पार्टी बा मुख गहर तुम ओडिया रे बा दशम श्रेणी रे तुम पढ़ीच जो मुख गहर कह जाए। एवं तापर देख सॉफ्ट पैलेट पैलेट अच्छी पैलेट हूँ जोटा हूँ आम तालु एवं टंग हूँ आमर जीभ एवं तापर देख एपिग्लोटिस अच्छी एपिग्लोटिस पर देख तुम ओएसोफागस जो खाद्य नली अच्छी ओएसोफागसटा क्या पाखे जाकिना ओपेन होता है जोटा अच्छी स्टोमक बा पाकस्थली ओपेन होता है। पाकस्थली देख पाकस्थली गोटे सरू पाइप परी बाहरी से पाइपटा देख गोड़े होना अच्छी जहाँ को कह स्मॉल इंटेस्टाइन एवं तापर अच्छी लार्ज इंटेस्टाइन। मन रखी तो स्मॉल इंटेस्टाइन देख एलियम और जेजुनियम तैयारी तापर देख लार्ज इंटेस्टाइन अच्छी लार्ज इंटेस्टाइन देख आसेंडिंग कॉलम अच्छी तापर देख ट्रांसवर्स कॉलम अच्छी तापर डिसेंडिंग कॉलम अच्छी देख सबुठ शेष अच्छी रेक्टम रेक्टम पर एनस बा मलद्वार। तो यही प्रकार संपूर्ण डायग्रामटा तुम देखिपार तुम पॉज मारिकिना बा स्क्रीनशॉट नेकिना तुम डायग्रामटा कर तुम बुझीपार।
तो देखिए सबुठ प्रथम एलिमेंटरी कैनाल कौन देखा. The elementary canal is a long coiled tube having muscular wall and granular epithelium existing from mouth to anus. तो elementary canal कौन पूरा परिपाक तंत्र क्रिया जहाँकि मुहर आरंभ करिकिना मलद्वार पर्यंत विस्तृत एवं गोटे सरू बा गोटे कॉइल टाइप रो ट्यूब अच्छी बा ट्यूब बा पाइप जहाँ कहबा आमे एवं ए पाइपटा केमती मसल्स बा मांसपेशी द्वारा गठित. तो यह कहते एलिमेंटरी कैनाल. द ऑर्गन कंप्राइज द एलिमेंटरी कैनाल इंक्लूड माउथ एंड फारिंग्स. मन रखिथ फारिंग्सटा कौन बुकाल फारिंजियल कैविटी रु तैयारी. तापर देखो ओएसोफागस अच्छी, तापर स्टोमाक अच्छी, स्टोमाक रु इंटेस्टाइन. तापर इंटेस्टाइन को दी भाग रे विभक्त कराई छि. गोटे अछि स्मॉल इंटेस्टाइन, गोटे अछि लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन फिर विभिन्न पार्ट अछि जेंति कि जेजुनम हो, इलियम हो. जेंति लार्ज इंटेस्टाइन केंति कोन कराई छि असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, तापर आसला ट्रांसवर्स कॉलन, तापर रेक्टन अच्छी से जगह तापर रेक्टन पर मलद्वार एमती ना लास्ट पर्यंत रहिला. तो प्रथम सर्वप्रथम आज आम देखा माउथ. तो माउथ कौन माउथ consist of vestibule and buccal or oral cavity. Vestibule is the space which is bounded externally by lips, cheek and internally by the gum and teeth. तो वेस्टिबुल टा तुम जान आम मुह बा आमर जोटा ओठ द्वारा से ताको घेरे किना रखी तापर चीक बा जोटा आम गाल द्वारा घेरे की देइतबा भीतर जो मुख गहरटा अछि ताको होते वेस्टिबुल. बुकाल और ओरल कैविटी अछि इज बाउंडेड बाय पैलेट. पैलेट कोन पैलेट जो ऊपर पार्श्व अछि पैलेट. थ्रोट विथ टंग बिलो एंड थ्रोट विथ टंग बिलो. बिलो माने कौन तलपट अच्छे आमर कौन टंग अच्छी जीभ अच्छी एवं जॉ विथ टीथ ऑन द साइड. साइड रे कौन अच्छी जोड़ा अच्छे माड़ी जॉ एवं से टीथ अच्छी. पैलेट होची जोटा मुझे क्या कहली जोटा होची ताळु. ताळु एटा होची दुई प्रकार पैलेट होची. गोटे होची एंटेरियर और गोटे होची पोस्टेरियर. एंटेरियर अर्थात सामना पट अच्छी देखो हार्ड पैलेट अर्थात हाथ को कठिन लगे एवं पोस्टेरियर पछपट अच्छी सॉफ्ट पैलेट बा नरम ताळु. हार्ड पैलेट हैव uvula as a free hanging flap which close the internal nair during swallowing the food bolus. तो जो आम खाद्यटा खाऊ ये जो से जगार गोटे अच्छी कौन फ्लैप टाइप अच्छी से फ्लैपटा कौन होता है आमर इंटरनल लेयर को से कौन करता है जो से समय क्लोज कर दी था कहीं खाद्यटा को आम गुड़ू. Soft palate bears transverse palatine rope supported by bones of or holding food during mastication. तो जेते बड़े आमे कौन हो जो ट्रांसफर पालाटिंग रॉप अच्छी जो सपोर्टेड बाय बोन से कौन करे जो आम खाद्य खाऊ से खाद्यटा को जो चोबा प्रक्रिया को मास्टिकेशन बा मिसऊ जो से कौन करते होल्डिंग करते क्या होल्ड करे फूड को से होल्ड करके रखे ताले आम चोबेकी मिसेवाई सरल करने आमको सुविधा हुए. The tongue is a free movable muscular organ attached to the floor of the oral cavity by the frenulus. Tongue not only helps in ingestion, mastication and deglutition of food but also helps in voice production and tasting of food. तो यह केवल खाद्य को एपट सेपट करना चोबेबा साहाय्य करे ना अथच से आम कथा कहबार हमको साहाय्य करे एवं खाद्यर टेस्ट केमिति अछि बा स्वाद केमिति अछि ताको बारिबारे हमको साहाय्य करे. द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिलाई सम ऑफ व्हिच बियर्स टेस्ट बड. तो सही जगह टेस्ट बड अछि बा स्वाद बारिबा पई जहा दरकार से जिनसटी ताको टेस्ट बड कह जाय सेटा अछि. Teeth are hard structure meant for tearing, cutting, crushing and holding food. Each teeth is embedded in a socket of jaw bones. This type of attachment is called तीखो डट. तो बहुत टाइम क्वेश्चन है आम जो टाइप टीथ अच्छी जोटा कि आमको कौन से जोटा सॉकेट जो टाइप सॉकेट रे जॉ बोन को से लागिकिना टीटा अटैच होकिना अच्छी ताको कौन कह जाए से थिको डंट बोली कह जाए. Majority of mammals including human being
form two set of teeth during their life. A set of temporary milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth. अर्थ कौन मुझे बुझे दूचे देख जिते आम आम जन्म पर जिते आम 6-7 मासर हेउ तापर आम धीरे धीरे दांत उठा लगे से ही प्रकार दांत हूँ आमर टेम्परारी टीथ कहीं टेम्परारी टीथ जहाँकि 7-8 वर्ष हो कि 9 वर्ष हो यही बयस कौन हुए छुआ मानकर से दांत गुड़ाक झड़ी जाए भांगी जाए तापर से जगह कौन हुए पुणी थे नुआ दांत उठी थाए तो से प्रकार दांत को परमानेंट टीथ जहाँकि आमर मृत्यु पर्यंत हुए तो वृद्धा बयस पर्यंत जो झड़ी जाए से दांतटा से पर्यंत से दांतटी रुहे तेणु दी प्रकार दांत अच्छी जोटा अच्छी जन्म पर जो दांतटी उठे और जहाँ 7-8 वर्ष पर झड़ी जाए भितर झड़ी जाए ताको टेम्परारी टीथ एवं तापर पुनश्च जो दांत उठी थाए जहाँकि आम मृत्यु पर्यंत हो कि वृद्धावस्था पर्यंत हो जो दांतटी रुहे सेटा होचे आमर परमानेंट टीथ दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट तो मन तो कह जाए डाइफायोडोंट अर्थात दी थर दांत उठी थाए ठीक अच्छे An adult human has 32 permanent teeth which are a 4 different type तो आमर 32टा दांत थाए जहाँकि हूँ डिफरेंट 4 प्रकार तेणु जेहेतु 4 प्रकार अच्छी हेटेरोडोंट ठीक अच्छे जदि गोटे प्रकार दांत थी होमोडोंट बोली कह जाए तुम जब +3 रे जीव बड़ क्लास रे गले हेटेरोडोंट कौन होमोडोंट कौन या विषय अधिक पढ़ो बर्तमान खाली मुझे तुमको कहीदे जेहेतु आम 4 प्रकार दांत अच्छे जहाँ तुम ओडिया अलरेडी पढ़ीच कर्तन दांत श्वान दांत पेषण दांत और चर्बण दांत ठीक अच्छे से प्रकार 4टी दांत थी या हेटेरोडोंट बोली कह जाए जहाँ को इंग्राजी में कह जाए इंसिसर जोटा आई कैनाइन जोटा हूँ सी प्रीमोलार जोटा PM एंड मोलार जोटा एम अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर and lower jaw is ICPMM is represented by the dental formula which is in human is 2123 by 2123 तो तार अर्थ कौन मुझे तुमको बुझे दूची 2123 अर्थ कौन तुम यार ऊपर बहुत प्रकार तुम ट्रिक क्वेश्चन भी पड़े तो मुझे तुमको बुझे दूची देखो जदि एटा होचे हमर पार्टी ठीक अच्छे देख जदि आम आम यही प्रकार भाग कर नवा ठीक अच्छे तो प्रत्येक सेट रे देख 2 1 2 3 अर्थात 2 1 2 3 को जब आम मिसेदेवा के 2 1 2 3 को मिसेदेला आमर हम 8टी दांत है तो 8टी दांत अर्थात एपटे तुम 8टी दांत भावी नियो एपटे 8टी दांत भावी नियो यही साइड 8टी दांत यही साइड 8 टोटाल 8 4टा 8 मिसले के 32टा दांत तो यही जो यही गोटे साइड रे जो 8टी दांत को कौ प्रकार भाग कराई जहाँ को 2 1 2 3 हिसाब से भाग कराई अर्थात जदि मुझे भाग करदेवी ठीक अच्छे तो सबुठ प्रथम यही जगह अच्छी इंसिसर 2टी दांत आई ठीक अच्छे 2टी दांत तापर को आसला जोटा हूँ आमर कानाइन दांत अच्छी गोटे 1 तापर आसला आमर प्रीमोलार PM जोटा हूँ 2टी दांत तापर आसला मोलार हूँ 3टा दांत तो यही प्रकार थी 2 1 2 3 कहला जब एपटे 2 1 2 3 सेमती एपटे भी 2 1 2 3 थी तो मिसीगले सेमती एपटे भी 2 1 2 3 थी एपटे भी 2 1 2 3 थी तो यह कहगला 2 1 2 3 जेहेतु गोटे साइड अच्छी तेणु ताको 2 1 2 3 यही प्रकार मेंशन करागला ठीक अच्छे ताल जब तुमको जब पचारे कि ICPMM आई जदि 2टा दांत ये हूँ तुम गोटे ये हूँ तुम 2टा ये हूँ 3टा जब यही प्रकार ताले पूरा आई बा इनसिसर दांत केतेटा अच्छी 2 रे आम 4 गुणी देवा 8टी एठी मध्य 4 गुणी देले 4टी एठी मध्य 4 गुणी देले हमर हैला 8टी एठी 4 गुणी देले हैला 12टी अर्थात 8 4 8 12 सबु तक मिसे देले 12 8 हैला केते 20 20 4 24 24 8 32 अर्थात टोटल हैला 32 टी दांत तेणु को 2 1 2 3 हिसाब रे कराई जे बहुत टाइम रे तुम मेडिकल एंट्रांस हो कि जेकोसी प्रकार एंट्रांस हो बहुत टाइम रे तुम क्वेश्चन आसे तुम देखियो टेम्परारी टीथ इन ह्यूमन के 2102 सेमती टेम्परारी टीथ जिते किंतु टीथ एट द एज ऑफ 20 से 2122 होता है किंतु ह्यूमन बा एडल्ट स्टेज रे 2123 अर्थात जोटा ज्ञान दांत बा जोटा को जोटा शेष जो दांत उठी थाए सेटा हूँ 2123 अर्थात गोटे गोटे दांत से उठी थाए
तब देखो मॉर्फोलॉजिकली टीथ कैन बी डिस्टिंग्विश एज होमोडोंट और हेटेरोडोंट जंती टिके आगु कहथि मो होमोडोंट कोन व्हेन द ऑल द टीथ आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर जंती कि वर्टिब्रेट एक्सेप्ट मेटाथेरियन एंड eutherian mammals सेमती heterodont होची when the teeth are different in structure and function they are distinguished in 4 types जेटा incisor canine premolar and molar एग्जांपल है मेटाथेरियन हो किबा यूथेरियन एमानकर देखा जाय हेटेरोडोंट टाइप रो आम मानको हेटेरोडोंट ही देखा जाय तो incisor होची 8टी मन रखि था canine होची 4टी तापर premolar होची 8टी आ molar होची 12टी तापर एनएमएल रिप्रेजेंट द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी इट इज कंप्लीटली आसेबुलर एंड avascular and non regenerable it helps in mastication of the food the element that harden the teeth enamel is called fluorine तो ताको मन रखि तो एटा बहुत टाइम रे क्वेश्चन आसबो जो जहा द्वारा एनामेल बा टीथ एनामेल को हार्ड बा शक्त करता सेही प्रकार एलिमेंट को कोन कह जाय ता कह जाय फ्लोराइन तब देखियो pharynx The oral cavity leads into a short pharynx which serve as a common passage of food and air. The oesophagus and the trachea जोटा जो wine pipe open into the pharynx. ए कार्टिलाजिनस फ्लैप एपिग्लोटिस जोटा होची जार काम होला जेतेबेले खाद्यटी जेतेबेले हम गिळू सेतेबेले से कोन करू से खाद्यटी काले श्वास क्रिया भीतर श्वासनली भीतर काले चाली जीवो सेति में एपिग्लोटिस रो काम होला से श्वास जो नळीटी अछि ताको से सेही समय बंद कर ता जो मुखटा को से बंद कर दिए जहाँ द्वारा कि खाद्यटी श्वासनली भितर न जाई से कौन हुए गिलिकिना आम खाद्यनली भितर पशि जाए तो यह कह जाए एपिग्लोटिस कह जाए द एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस टा कौन ओपनिंग ऑफ द वाइन पाइप माने कौन जोटा होचे हमर एयर पैसेज पाइप जोटा किंबा ताको जोटा हम श्वासनली बोली कहू ड्यूरिंग स्वालिंग बा गिलिबा समय रे देखो ओएसोफागस कौन द ओएसोफागस इज ए थीन लॉन्ग ट्यूब अबाउट कहते 25 सेंटीमीटर which extended posteriorly passing through the neck thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag-like structure called stomach एवं ये ओएसोफागसटा फारिंग्स रु आरंभ होला एवं जहा कि केते पर्यंत विस्तृत जोटा कि होचे हमर स्टोमाक पर्यंत विस्तृत हे कि ना अछि जहा कि नेक बा गला हमर थोराक्स एवं डायफ्रागम छाती देकिना से तार गति करिथाय द मस्कुलर स्पिंटर जोड़ा होचे हमर गैस्ट्रोएसोफेजियल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द ओएसोफागस इनटू द स्टोमक तो ओएसोफागस रो स्टोमक पर्यंत जो ओपनिंग जो स्पॉटटा अछि से ओपनिंग जगहटा कह जाय मस्कुलर जोड़ा होचे स्पिंक्टर बोली कह जाय तब देखिबा स्टोमक इज द मोस्ट distensible and widest organ of the alimentary canal. Empty stomach possesses fold called gastric roof which disappear when the stomach is distended with food. Loss of gastric roof are one of the earliest sign of stomach cancer. जदि गैस्ट्रिक रोग अछि ताहले जाना पड़े जे एटा होचे स्टोमक रो कैंसर हेबा पई बहुत मात्रा रे एटा एथ्रु जाना पड़ी जाय जे एटा होचे स्टोमक रो कैंसर हे पारे जोटा होचे अर्ली साइन ठीक अछि द स्टोमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज 3 मेजर पार्ट तो 3 मेजर पार्ट कोन अर्थात स्टोमक को तीनटा भाग रे विभक्त कराई छी गोटा होचे ए कार्डियक पोर्शन इनटू व्हिच द ओएसोफागस ओपन तापर सेटा हला तापर नेक्स्ट हला ए फंडिक रीजन एंड द फाइलोरिक पोर्शन व्हिच ओपन इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन तो फास्ट देखो जदि एटा हला तमर गोटे स्टोमक रो जदि मु डायग्राम करके देखै दोचे जदि एटा होचे हमर स्टोमक
ঠিক আছে। তো এই প্রথম পার্টটাকে কুহগলা কোণ, এই প্রথম হচ্ছে কার্ডিয়াক পোর্সন, এই যে মঝি পোর্সনটা হল সেটা হচ্ছে ফন্ডিক পোর্সন, এবং এই জায়গায় হচ্ছে আমার স্মল ইন্টেস্টাইন ওপেন হয়েছে, এই পোর্সনটা কুহগলা কোণ, এই পোর্সন কলে পাইলোরিক পোর্সন বলি কুহগলা, মনে রখিথ পাইলোরিক পোর্সন। তো এই প্রকার 3 ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তারপরে দেখিবা কার্ডিয়াক পার্ট আর সো কল্ড বিকজ ইট ইজ প্রেজেন্ট নিয়র দ হার্ট, যেহেতু এটা হার্ট পাখে রিপ্রেজেন্ট করুছি বা পাখে অছি, তেণু তাকে কার্ডিয়াক পার্ট কুহযাଏ। ইট ইজ ব্রড at upper part with cardiac sphincter which prevents regurgitation of the food, অর্থাৎ ফুডটা যেটা আমার ভিতরকু আসে সে ফুডটা পুଣି থরে উপরকু উঠিଯିବନି, ফুডটা ভিতরকু প্রবেশ করিব, সেইপাই এই স্পিংক্টরর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ଅଛି। ফন্ডস ইজ কমনলি filled with air and gases। তো এটা তুমি ডায়াগ্রাম দেখ, ফন্ডস ଅଛି, ফন্ডসর কাম যেটা হচ্ছে এয়ার যেটি কিংবা গ্যাস থাকে, তা তলকু দেখ তুমি দেখ লঙ্গিচুডিনাল লেয়ার হয়েকিনা ଅଛି ସବୁ। তো সেই জায়গার তারপরে তলকু তুমি দেখিপারুছ যে ওইসোফাগসটা উপরকু লাগিকিনা ଅଛି, এবং দেখ ওইসোফাগসটা লিড করিকিনা কোটি ওপেন হয়েছে, এই যে স্পিংক্টরে ওপেন হয়েছে। তারপরে দেখ কার্ডিয়াক যেটা আছে, যেটাকে উপর পার্টটা হচ্ছে কার্ডিয়াক, তাপরକୁ ମଝି ପାର୍ଟଟା ରହିଲା ଏବଂ ତଳ ପାର୍ଟଟା ପାଇଲୋରସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆସିକିନା ଆମର କ'ଣ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ ଓପେନ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ absorption ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜୁଆଲି ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରାଏ ଫେସେସ୍। ফেসেস মানে কোণ বা যেটা মল, যেটাকি সে মলটাকে মধ্যে ফর্মেশন করিবারে সাহায্য করে, অর্থাৎ এই জায়গায় মোস্ট অফ দ ফুড এবজর্পশন হয়ে শোষণ হয়ে ডাইজেসন হয়ে সারা পরে শোষণ হয়ে, এবং বড়কা যেটা আমার যেটা রফ মেটেরিয়াল অছি সেটা কোণ ফেসেস বা মল হিসাবে সেটি ফর্মেশন হয়ে। ইট ইজ ডিভাইডেড ইন্টু 2 পার্ট, গোটে হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন, গোটে হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইন। স্মল ইন্টেস্টাইন ইজ ডিস্টিংগুইশেবল ইন্টু 3 রিজন, গোটে হচ্ছে ইউ শেপ duodenum, a long coiled middle portion jejunum and a highly coiled হচ্ছে ileum। তো 3টা ভাগে বিভক্ত হলো স্মল ইন্টেস্টাইন, গোটা হচ্ছে duodenum, গোটা হচ্ছে jejunum আর গোটা হচ্ছে ileum। The opening of the stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter. Ileum opens into the large intestine. Duodenum has ampulla of ampulla of Vater which receive both bile duct, जोटा जो bile duct से कोड बा जोटा जो लिवर से bile duct को से संग्रह कला, and main pancreatic duct जोटा होची pancreas से रिसीव कला, and whole whose opening was guarded by sphincter of OD. Ileum is thinner than jejunum and less vascular. It is the longest part, 3.5 meter of the small intestine. Small intestine is the major site of the digestion and absorption of nutrition. Large intestine consist of जोटा होची सेकम, तापर देखो colon और rectum. Cecum is a small blind sac which hosts some symbiotic microorganism. A narrow finger-like tubular projection, the vermiform appendix, which is a vestigial organ, arises from the cecum. The cecum open into the colon. तो vestigial organ इस cecum रे देखा जाए, vestigial organ कोड़ा vermiform appendix। तो ভেস্টিজাল অর্গান অর্থ হচ্ছে যেটা হচ্ছে অবশেষাঙ্গ বা যে অঙ্গর কৌশি কার্য নথাকে তাকে ভেস্টিজাল অর্গান কুহযাଏ। তো ଏହା সেকমরে দেখা যায়, যেটা হচ্ছে আমার কোণ vermiform appendix. The column is divided into 3 parts, গোটা হচ্ছে ascending column, a transverse and descending part. The descending part open into the rectum which open out through the anus. The colon is
concern with absorption of water and undigestion food, salt, vitamin etc. Hence concern with feces formation अर्थात मल formation से साहाय्य करे. Colon bacteria also synthesize vitamin B12 and K बा जोड़ा होचे पोटासियम. तो तमे जानबो जे को बैक्टेरिया तो ता ना होचे इस्चेरिया कोलाई जोड़ा होचे ई कोलाई ना रे प्रसिद्ध जहा कि होचे एही विटामिन B12 हमको देई थाए. Rectum has strong sphincter muscles in its wall. The sphincter keeps the canal as well as anus closed when not used for defecation. तो जेतेबेले ई कैनाल कौन सी काम ना थे से समय स्फिंक्टर काम हैला एही कैनाल गुडी को बा एनस को से क्लोज करके रखे. Anal canal connect rectum with anus and it is about 3 cm long. तो anal canal ला कोटु कोटु कनेक्ट हिचे रेक्टम रो नेकिना एनस पर्यंत कनेक्ट हिकिन रहिची जहा कि जो रेक्टम रे जो मल जमा ହେଇକି रहे से मल को से एनस बाट देखिना बाहर करबा पर्यंत जो जो कैनाल थ्रू रे से एनस को आसी थाए ता कह एनल कैनाल. Anus is the terminal inferior opening of alimentary canal which is guarded by a internal involuntary sphincter and the external involuntary sphincter. The chief function of large intestine is the absorption of water and alimentation of solid waste. The wall of the alimentary canal from esophagus and rectum passes 4 layers, namely serosa, muscularis, submucosa and mucosa. Serosa is the outermost layer and made up of thin mesothelium with some connective tissue. Muscularis is the formed by smooth muscles usually arranged into an inner circular and the outer longitudinal layer. A oblique muscle layer may be present in some region. The submuscular layer is formed of loose connective tissue containing nerves, blood and lymph vessels. In duodenum, glands are also present in submucosa. The innermost layer lining the lumen of the alimentary canal is the mucosa. This layer form irregular fold जोड़ा होचे रफ in the stomach and small finger like folding called villi in the small intestine. The cell lining the villi produce numerous microscopic projection called microvilli giving a broad border appearance. These modifications increase the surface area enormously. Villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessel called the lacteal. Mucosal epithelium has a goblet cell which secrete mucus that helps in lubrication. Lubrication अर्थ कौन से किसी तरल पदार्थ दे था जोटा कि मसृण काम करता जमी कि आम ग्रीस दे था साइकल जो जोटा कि जार काम हो कौन से मसृण कर चिकण कर साहाय्य करे तरल पदार्थ दे था सेटा हूँ लुब्रिकेशन ताको कह जाए. The mucosa also form gland in the stomach and crypt in between the base of the villi in the intestine. All the 4 layers shown modification in different part of the alimentary canal section of small intestine mucosa showing villi. तो एटा थिला तुम देख डाइजेस्टिव सिस्टम तुमको डिटेलटा बुझेली जे आमर मुख ठू आरंभ करी बा बुकाल कैविटी माउथ रु आरंभ करी एनस पर्यंत थिबा विभिन्न प्रकार पार्ट रो काम कौन एवं कोहा पर को पार्टा अच्छे आशा रखुची तुम मैंने बुझी पात एकदम सिंपल सेंटेंस अच्छी एत डिफिकल्ट सेंटेंस ना जो जगह तुम देखुच टे माने मेन फोकस करकिना हाइलाइट सेंटेंस गुड़ाक अच्छे ताको तुम भल कि अंडरलाइन करकिना लेख एवं प्रायतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित भाव आसो. तो आज पे तो क्लास एतकी. थैंक यू.